A very good morning, students. I am Mr. Amit More. Yesterday, we have started with the unit number 3 of employability skills, that is the basic ICT skills, in which we have learnt about the basics related with operating systems, functions of operating systems, and importance of operating system. And we have learnt the basics that are related with Windows operating system. So today we are going to see the one of the function of operating system, that is the file management. Here they have given the diagrammatically they have shown how the files can be managed. Now let us see it. The file concept, file operations, file organization, directory structures, and file system structures. Now all these comes under the file management, which is the function of operating system. Now everything you store on the computer is stored in the form of file. File system is a way in which you give name to a file, store it, and retrieve it. There are specific naming conventions for naming the files or folders, like characters that can be used, maximum number of characters, etc. Files can be separately placed into groups called as folders or directories. Here, if you observe, folders can be also known as the directory. In case of the disk operating system, that is the DOS, the folders are known as directories. Now, in case of our Windows operating system, we will call it as the folder only. Each directory or folder can contain related files or subfolders. A subfolder may contain one or more files and subfolders within. Subfolder means what? Folder within folder. Okay. This allows easy accessibility of files. Now, the files are managed in the hierarchy. This allows you to view the files in the current directory and then move to subdirectories. Here you can observe that hierarchy of files. Look, they have created in the D drive, they have created folder 1 and folder 2. In the folder 1 they have created one file, they have stored one file and one folder, and in the folder 3 again they have stored two files, that is the file 2 and file 3. Means what they want to tell you, you can store a folder within folder or file within folder, but just observe one difference you will come to know: you cannot store file within file or folder within file. Okay, so just observe it, you will come to know. Here again in the folder 2 they have stored the folder 4, and in the folder 4 they have stored file 4 and file 5. Okay, means in the file you cannot store any other file or any other folder. So by observing this hierarchy you can differentiate between folder and file. If you remember it, in 9th standard we have covered already the difference between file and folder. The file can have extension. If you remember, the Word document has the extension. For example, your file name is abc.doc. Okay, then the Excel file may have extension xls. If your file name is abc, then abc.xls. If you have created PowerPoint presentation with the name abc, then abc.ppt. ppt is the extension for that particular PowerPoint file. Okay, and folder does not have any extension.
This is the first difference. Second difference, you can store files within folder, but you cannot store folder within file, or you can store folder within folder similarly. Okay, so this is the difference of the file and folder. Next we are going to learn about the operations that are related with files and folders. Creating and managing files and folders. Look, creating a folder, the steps to create a new folder are, now they have given. Double click the computer icon here in the figure number 5. This window will appear. Now if you want to create a folder in the D drive, then you can double click on the local disk D, that is the D drive. A window like this in the figure number 6 will appear. Okay, select the drive in which you want to create the folder, say local disk D. Now window will appear which shows the files and folder in the D drive, that is the local disk D. Now if you observe below that title bar, new folder option is available. They have also mentioned the new folder option. You just click over there and a new folder will appear. Now here step number 4 they have given, click new folder on the toolbar or right click anywhere. Now this is the second method of creating a folder. Right click anywhere in the blank area of right column. A shortcut menu will appear. Select new folder from the shortcut menu. Now look this, here in the blank area of local disk D, they have shown, they have right clicked and new option appears over there, and you have to select the folder option. A new folder will be created with the name new folder, which will be highlighted in front of you like this in the figure number 8. New folder is created. If you want, you can rename that folder at that time only. Okay, now look here step number 6, type a name for the folder which is given in the figure number 9 and press enter key here. Okay, my folder. As per your convenience, you can give folder name to that particular folder. Okay, next operation is related with creating a file. Now we have seen how to create a folder. Second is creating a file. Now to create a new file, right click anywhere in the blank area of the right column. मतलब आपको जो भी जिस एरिया में आपको फाइल क्रिएट करनी है, डेस्कटॉप होगा, नहीं तो आपका सी ड्राइव होगा, डी ड्राइव होगा, वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट राइट क्लिक एनीवेयर इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द राइट कॉलम. राइट कॉलम ही रहना चाहिए ऐसा नहीं है, एनीवेयर इन द ब्लैंक एरिया, इट शुड बी ब्लैंक एरिया. आपको फोल्डर नहीं तो फाइल के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना है, ब्लैंक एरिया के उधर आपको राइट क्लिक करना है. नाउ इन दैट शॉर्टकट मेनू क्लिक न्यू एंड सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट. ओके, नाउ what you have to do, after clicking that new, you have to select the type of file that you want. Okay, for example आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, MS वर्ड चाहिए, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल चाहिए, any type of file you can select. Okay, and the file you have selected will be created in front of you. Now next operation is renaming files and folders. Now renaming
files and folders, there are various steps or various options available in front of you. To rename a file or folder, the steps are: right click the file or folder. ओके, जिस फाइल और फोल्डर को आपको रीनेम करना है उसको आपको राइट क्लिक करना होगा। अभी देखो, आपको पहले क्या करना था, नया फोल्डर नहीं तो फाइल बनानी थी, तब आपने ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक किया। अभी आपको जिस फाइल के साथ आपको ऑपरेशन करना है, परफॉर्म करना है, उस फाइल को आपको राइट क्लिक करना है, आपको उसको रीनेम करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद जो शॉर्टकट मेनू अपीयर होगा उसमें से रीनेम ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, एज शोन इन दिस फिगर 11। ओके, second last option is the rename. Whenever you will click on that rename, you will observe that blue color highlighted will be appear in front of you for that particular file or folder, and then you just type your name as per your convenience and press the enter key. Okay, or just select the file or folder and press the function key F2. This is the second option, but generally this right clicking option will be very much easier than that. Okay, because if the operating system changes, the shortcut key may change. So remember that first method of renaming only. Next operation is deleting files or folders. To delete file or folder, what you have to do, click the file or folder, press the delete key on the keyboard. Okay, means what, you have to select the file or folder that you want to delete and click on delete. Just press the delete key from your keyboard, or right click the file or folder and select the delete option from the shortcut menu. Okay, so here they have given some practicals that are related with the things that we have learnt. Starting of computer, double click the computer icon, local disk D, and you have to create my new folder in the local disk D and renaming my folder 1. Okay, means creation of folder and renaming the folder, these two operations they have suggested. Okay, that you have to perform. Now here some exercise is given that you have to solve. Similar types of files can be placed into group called as folder. मतलब हम सिमिलर टाइप ऑफ फाइल कहाँ स्टोर करते हैं, फोल्डर में स्टोर करते हैं हम. आई हैव टोल्ड यू वन एग्जाम्पल इन 9th स्टैंडर्ड, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज रिलेटेड विद द मूवीज. all the Bollywood movies you will store in the folder Bollywood. All the South Indian movies you will store in the folder South Indian movies, like that. Or all the Hollywood movies you will store in the folder Hollywood, etc. In this way you can store those files. Okay, next, mention any one way in which you can create new folder. आपको इधर एक्सप्लेन करना है फोल्डर क्रिएशन का, जो आपको सुटेबल वे है वो आपको इधर मेंशन करना है, आपको लिखना है. यू हैव टू राइट दिस इन द नोटबुक. टू चेंज द नेम ऑफ द फोल्डर, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिलीट अ फोल्डर. हाउ कैन यू डिलीट अ फोल्डर? You can select the folder and you can press the delete key on the keyboard and definitely you can delete the folder. Okay, now next operation related with the files, that is the copying files and folders. Now various methods they have given how to copy files or folders.
When you copy a file or folder, duplicate of original file or folder is created at the new location. The original remains as it is. Okay. Now, कॉपी कर रहे हो उसका मतलब क्या है, दो जगह पे वो फाइल नहीं तो फोल्डर आपको दिखाई देंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. जहाँ से आप कॉपी कर रहे हो, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर कॉपिंग द फाइल, दैट प्लेस इज नोन एज सोर्स, एंड द प्लेस इन विच यू आर गोइंग टू पेस्ट दैट पर्टिकुलर फाइल, or you are going to keep the copy of that particular file or folder, is known as the destination. Okay. For example, if you want the file to be copied from desktop to your D drive, at that time your desktop will be the source and D drive will be your destination. Okay. Now, here they have given the first way of copying file or folder. Shortcut menu, right click the file or folder that you want to copy. आपको जिस फोल्डर नहीं तो फाइल को कॉपी करना है उसको राइट क्लिक करो और कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करो फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. सिलेक्ट द ड्राइव और फोल्डर वेयर यू वांट टू मेक कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर. आपको जिस फाइल या फोल्डर में उसकी कॉपी करना है तो वो फाइल नहीं तो फोल्डर आपको ओपन करना होगा. नेक्स्ट इज राइट क्लिक एंड सिलेक्ट पेस्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. ओके. मतलब देखो, अगर आपने इधर शायद डी ड्राइव दिख रहा है ना, सो सपोज आपने डी ड्राइव में से एक फोल्डर आपने कॉपी किया है, तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके कॉपी किया. आप आफ्टर दैट सी ड्राइव ओपन किया, उधर जो ब्लैंक स्पेस है उधर राइट क्लिक करके आपने पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया और आपका फोल्डर नहीं तो फाइल उधर पेस्ट हो गया. ओके. नेक्स्ट मेथड इज, सेकेंड मेथड इज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. Drag and drop method means what? To copy a file or folder, hold down the control key while copying it to the new location. मतलब आपको डायरेक्टली वो जो फोल्डर है वो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल की प्रेस करके रखना है एंड डायरेक्टली आपको माउस से वो फाइल नहीं तो फोल्डर डेस्टिनेशन की तरफ ड्रैग करना है, तो आपकी फाइल नहीं तो फोल्डर उधर कॉपी हो जाएगा. बट दैट सिलेक्टिंग राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, दिस इज easier method, I think so. And third method is using the keyboard. Select the file or folder that you want to copy, press Ctrl C. All of you know the shortcut key for copying the file or folder is Ctrl plus C to copy the file or folder. Open the destination folder. Destination folder means the folder in which you want to paste that particular file or folder, and press Ctrl V to paste the copied file. जो भी फाइल आपने कॉपी की है उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl V is the shortcut key. Okay. Next topic is moving files or folders. Again the same. When you want to move a file or folder, original file will be moved from one location. मतलब सोर्स में से वो फाइल डिलीट हो जाएंगी और डेस्टिनेशन की तरफ आपको वो फाइल दिखाई देगी. ओके, दैट इज मूविंग ऑफ फाइल एंड फोल्डर. ओके, मीन्स ओनली सिंगल कॉपी विल बी रिमेनिंग. अभी मूविंग करना है मतलब आपको कट पेस्ट ऑपरेशन करना है. So right click the file or folder that you want to move. Here one mistake is there. Shortcut menu में first step, A step जो दिया है, right click the file or folder that you want to copy. Instead of copy you have to write move.
I'm going to correct it in the PDF, no problem. Second option, select cut from the shortcut menu. Select the drive or folder where you want to move the selected file or folder. मतलब destination folder आपको open करना है, and right click in the blank area and select paste option from the shortcut menu. Okay. Second is drag and drop. अभी देखो इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करने के लिए नहीं बोला है उन्होंने. टू मूव अ फाइल और फोल्डर, सिलेक्ट द फाइल एंड ड्रैग इट टू द न्यू लोकेशन. ओके. कॉपी में हमने क्या देखा, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड एंड ड्रैग द फाइल टू द destination. So here here this second method is somewhat easier because you have to drag the file directly to the location by using the mouse. Okay. And third is using the keyboard. Using keyboard, select the file or folder, press Ctrl X to cut the file or folder, open the destination and Ctrl V, means cut paste operation they have told by using the keyboard. Next is permanently deleting file. Permanently deleting file. Now look what happens whenever you delete any file. At that time it gets stored into the recycle bin. Okay. So recycle bin icon you have to open and then click empty recycle bin, means right click the recycle bin and click on empty recycle bin. So what will happen, the contents in recycle bin will get deleted. Or open the recycle bin by double clicking, then recycle bin window will appear and select empty the recycle bin option. नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, रिसाइकल बिन में बहुत सी फाइल से आपको अगर लग रहा है कि ये पर्टिकुलर फाइल आपको सिर्फ, अभी देखो इधर 10 फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस 10 में से अगर आपको लग रहा है कि 5 फाइल आपके काम की है और 5 फाइल आपके काम की नहीं है, तो फिर जो काम की नहीं है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे. और बाकी के जो फाइल है उनको आप रिस्टोर कर सकते हो. हियर नेक्स्ट दे हैव गिवन रिस्टोरिंग फाइल एंड फोल्डर. रिस्टोरिंग करने से क्या होगा, वो फाइल जहाँ से डिलीट हुई थी, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव से अगर आपने फाइल डिलीट की है, वो अभी फाइल रिसाइकल बिन में आएगी, और रिसाइकल बिन में अगर आप रिस्टोर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइल फिर से आपको डी ड्राइव में दिखाई देगी. ओके. मतलब आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है एंड रिस्टोर करनी है, तो वो फाइल आपको डी ड्राइव में फिर से दिखाई देगी. ओके. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फाइल और फोल्डर? टू रिकवर अ फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, राइट क्लिक द फाइल एंड क्लिक ऑन रिस्टोर लाइक दिस. देखो अभी सेकंड फाइल उनको लग रहा है कि हमें ये फाइल फिर से चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिस्टोर किया, देन ऑटोमेटिकली दैट फाइल गॉट रिस्टोर्ड एंड यू विल फाइंड दैट फाइल फ्रॉम द प्लेस वेयर यू हैव डिलीटेड. जहाँ से आपने डिलीट किया है उधर वो आपको मिल जाएगा. ओके. अगर आपको सब, हाँ, जैसे मैंने बताया, सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन रिस्टोर दिस एटम. नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोला है. सो लेट्स ट्राई इट. स्टार्टिंग योर कंप्यूटर, डबल क्लिक कंप्यूटर आइकॉन, डबल क्लिक लोकल डिस्क डी, क्रिएट न्यू फोल्डर, यस, रीनेमिंग, कॉपी, open folder my text files in my document, create another folder named my new files, move this folder my new files on the desktop. आपको मूव भी करना है, कॉपी भी करना है, डिलीट करना है, रिस्टोर भी करना है. जो ऑपरेशन हमने देखा है वो सब आपको करना है. ओके. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग द नोटपैड. सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल यू हैव टू टाइप. आपको वो फाइल
सेव करना है माय न्यू फाइल्स नाम के फोल्डर में. ओके, मीन्स स्टोरिंग द फाइल इनटू द फोल्डर. वर्कशीट दे हैव गिवन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड कॉपिंग अ फोल्डर. अभी मूव करना और कॉपी करने में क्या डिफरेंस है. आई हैव टोल्ड यू, व्हेन यू मूव अ फाइल a single copy remains. मतलब means the file will move from source to destination, means at the source the file will not be there. From the source the file will get deleted and it will appear at the destination. And when you copy the file or folder, at that time the folder will remain at the source also and destination also. Difference between file and folder, as I told you, file has extension, folder does not have extension. We can store the files within folder but we cannot store the folders within file. These are the two differences. Next is name the set of commands to move a folder from one location to another. Set of commands to move a folder from one location to another. Cut means right click that particular folder, cut option, this is one command. Open the destination, right click in the blank area, paste option, this is the second command. Okay, cut and paste option commands are used to move a folder from one location to another. Next is name the place where deleted files are placed. Recycle bin. How can you empty the recycle bin? By right clicking the recycle bin icon and click on empty recycle bin. Okay, so for today this is it. Okay, so I hope you have understood everything. If you like this video, just like it and subscribe it. Thank you.